आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ महफूज और खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सईदा सरफ अकबर है और मैं हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर एंड एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग करती हूँ। हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के तहत आजकल हम लोग आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है डिफरेंट टाइप्स के वेबिनार्स कर रहे हैं। स्पेशली अभी कोविड-19 के एरा में हम लोगों ने जो है डायबिटिक के हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से डिफरेंट टाइप्स के जो है मौज़ूआत पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में कि अभी तक, पहले मैं आपको अपना टॉपिक बताऊं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसिशन मेडिसिन। प्रिसिशन मेडिसिन, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। और ये यूनिक और ये थोड़ा सा डिफरेंट इस हवाले से है कि हम में से बहुत से लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा आगाही नहीं रखते हैं। हमें इसके बारे में इतनी ज़्यादा अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रिसिशन मेडिसिन क्या है और किस तरीके से जो है ये आजकल हमारे तमाम चीज़ों पर असरअंदाज हो रही है और ये हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स में किस तरीके से हमें इसको लेकर आगे चलना है और क्या क्या इसके जो है हमारे पास बेनिफिट्स या इसके साइड इफेक्ट्स या क्या क्या इसके चाहे तमाम पैरामीटर्स हो सकते हैं। और आज इस प्रिसिशन मेडिसिन के हवाले से हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, जो हमें आज इसके बारे में बताएंगे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ही इज अ वेल नोन साइंटिस्ट और ये कि माशाल्लाह से पूरी दुनिया उनको जो है उनके काम की बेस की बुनियाद पर, उनके जो डिफरेंट साइंस के की दुनिया में जो उनकी एक इजादात हैं, जो उनकी चीजें हैं, उसके लिहाज से सब उनको जानते हैं। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर नवेद आई सैयद। ही इज अ चीफ साइंटिस्ट, क्रिएटिव डिस्कशन लैब, a peak scholar, Cumming School of Medicine, University of Calgary, Canada. And mashallah say Dr. Syed was awarded the Tamgai Imtiaz Medal of Excellence, the highest civilian award for research and innovation from the government of Pakistan. And Dr. Syed is also the recipient of Canada 150 medal by the Senate of Canada. थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन प्रोफेसर डॉक्टर नवेद सैयद कि आपने हमें आज हमारे हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में ये जो हम एक वेबिनार की सीरीज का हमने इनकाद किया हुआ है, उसमें आप हमने आज दोबारा हमारे साथ आप शरीक हुए और फिर ये कि जो हमारे लोगों के जहन में तमाम चीज़ें हैं, इसको जो है आपने हम आज आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे कि प्रिसिशन मेडिसिन क्या है और किस तरीके से हम इसके जो है फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तुम्हारा इज़हार तशक्कुर सदफ। आई एम रियली ग्रेटफुल that you have given me the opportunity, and also your Hashmanis group of hospitals. I hope that I think my job is to really make everyone uncomfortable. So I will throw out some things that few years ago we thought that they were science fiction, but they actually no longer science fiction. But I will still present something that we are heading in that direction. So for the first part of my talk, I will talk about what are the latest technologies that are coming into healthcare sector. So I will touch upon a few of them, and then we will discuss as to how far we are, how along the path we are, how far we are from implementing here in hospitals, and what would it take for us to implement them in Pakistan, for example. And in the second part of my talk, I will describe some of my own research as to how these technologies are paving the way for us to move the precision health or personalized health, as the topic is, forward. So I don't know how people feel comfortable. I feel comfortable in Urdu or English or a mix. I will leave it for you to decide as to how you want to pursue.
सर हमारे पास जो है अभी यानी कि जो जिन लोगों ने हमारे हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फेसबुक पेज पर जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ इसके लोग हैं कि अब तो हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर हम मिक्स करके थोड़ा सा कुछ उर्दू इंग्लिश उसमें करके चीज़ों को डिस्कस कर लें ताकि बेहतर तरीके से जो है हम लोग इस चीज़ को समझ सकें कि क्या है प्रिसिशन मेडिसिन. So let me know when you want me to start and I will start then. Sure, sir. We can start. Okay, let me share my screen. Can you see my screen? Yes, sir. We can see. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए इस वक्त तो आपके यहाँ मोस्ट लाइकली दिन निकला हुआ है, हमारे यहाँ जो है चांद निकलने वाला है. It's almost past almost midnight. It's actually past midnight. So इस वक्त हमारे यहाँ रात के 12:07 हुए हैं और जबकि आपके यहाँ 11:07 हुए हैं. So this is actually a picture of our downtown from my house. So when I'm sitting on the deck, I can look at the map. Today what we are really interested in talking about is not how medical, field or medicine, a field of medicine is practiced, but what is really the future of medicine, where things are heading, both in North America and then the rest of the world, the Western world में इस वक्त दुनिया जो है वो मेडिसिन की फील्ड में किस सिमत में जा रही है और कौन-कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त मंजर आम पे भी आ चुकी हैं, प्रैक्टिस में भी आ चुकी हैं. तो उसमें से हम कुछ को टच करेंगे कि जिनका इमीडिएट मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी होना चाहिए और हो सकता है. लेकिन इससे पहले मैं आपको यानी मौजूदा सूरत हाल या कुछ 2-4 साल आगे बढ़ने से ज़्यादा मैं एकदम आपको 30 साल आगे ले जाऊंगा और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है वो किस नहज पे जा रही है और इसमें कितनी हकीकत है, how much is really science fiction and how much of it is a reality. So the learning objective for today's talk are really, we will talk about health sensors and telehealth. And as you know, that the telehealth has really taken off. It's playing a very important role, and especially during COVID-19 related pandemic, most of these physicians were seeing their patients online, and also all the health records are kept online. Our province has a population of Alberta, has a population about 3.7 million, but all of these patients are on one grid. So there is only one healthcare system that takes care of these patients, and everything is done through telehealth. So we will talk about telehealth, and it's important. The second learning objective will be really genetic testing and gene therapies, and what really is the future of genetic testing and gene therapies in years to come, where we are and how things are progressing. We will also talk about immunotherapies, as these immunotherapies, for example, you saw in the recent pandemic that the mRNA-based vaccines, these vaccines could also be actually turned, or the similar approach could be turned into tackling cancer and other related diseases. We will then also talk about 3D printing and how 3D printing is really important, whereby you could take an MRI image of a patient and then print out the entire brain of that individual and then plan your surgery as per the real 3D printed brain, or any other organs, whether these organs could be 3D printed cartilages, bones, for example, and other heart structures that could be 3D printed rather than looking for transplants from the donor patients. Then we will talk about nanotechnology, how this nanotechnology is paving the way for the future of medicine and what role it might play in medicine. उसके बाद हम focus करेंगे जो virtual reality है या augmented reality है या जो mixed reality है, इसका क्या role हो सकता है एक patients की या physicians की training में, residents and fellows की training में, surgeons की skill enhancement में, या फिर ऐसे लोग कि जो post traumatic stress disorder के
का शिकार हुए हैं, उनको हम किस तरह से वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी से जो है वो उस सिचुएशन से या उस ज़हनी कैफियत से बाहर निकाल सकें। और फिर हम लोग बात करेंगे सर्जिकल और मेडिकल जो रोबोटिक्स है, how these robots are actually playing very important role in terms of performing surgeries, whereby a doctor sitting in Karachi can actually perform virtual surgery of a patient who is sitting either in Hyderabad or in Lahore, provided कि आपके यहाँ बिजली न चली जाए, जो कि अक्सर आपके यहाँ होता रहता है. So the other important thing is that we also know that artificial intelligence is really driving the field of medicine, whereby we have tools, and these tools can recognize, many of these, for example, MRI, CT, X-ray images, and these artificial intelligence devices can pinpoint the abnormalities or pathologies in any tissue with exquisite accuracy. So you don't need really highly trained and qualified radiologists and others to predict or have a predictive model that could predict whether a person is likely to develop Parkinson's disease, Alzheimer's disease, or if a person will likely have, other cardiac abnormalities as well. And finally, we will touch upon brain computer interfacing, and that's my area, and how these brain chip implants can play a very important role in terms of regaining brain function that is lost either due to stroke, trauma, injury, Parkinson, या ऐसी निस्यान की बीमारी है, या जैसे आपके आराइशे की बीमारी है. इन बीमारियों की वजह से जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस परमानेंटली लॉस हो जाते हैं, उनकी कोई क्योर नहीं है, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो ये कैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग टेक्नोलॉजी, किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि वो मसनूई हाथ को भी कंट्रोल कर सके, मसनूई टांग को भी कंट्रोल कर सके, जो पैराप्लीजिक हैं या क्वाड्रोप्लीजिक हैं, how could these actually technologies help them? So देखिए, ये इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे अहम बात है, and I always say it's all about the timing. And if your timing is correct, you could have a picture perfect environment that would allow you to be able to capitalize on all the opportunities that are there. देखिए हमारे यहाँ जो है अभी तक मेडिसिन के प्रोफेशन को हम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जो अर्ली 30s में या 20s में था. We have not brought in the innovation, or we have not kept up to the latest technologies, and these technologies are revolutionizing the field of medicine. If we are not really on board this train, then we will miss that train. So I think it's really important. So these are the learning objectives for those residents and fellows who are interested in this particular talk. So I will begin by showing you that this is your future doctor. This is how your doctor would actually look like. वो अक्सर कहते हैं कि आबादी डॉक्टरों की जो बढ़ती रही यूं ही घर घर सदा लगाएंगे बीमार कोई है. So only those doctors and trainees who have kept up with the latest technologies will be the most effective, and they will be able to handle things like the COVID-19 pandemic. We had no idea as to what happened, and even those countries that actually knew but they did not really rely on the technology, जैसे अमेरिका में आपने देखा कि कितनी डेथ्स हुई, क्योंकि वो जब adoption नहीं होगी टेक्नोलॉजी की, आप उसको वो नहीं करेंगे, you still have really an issue. So this is how your future doctor is going to look like. Now I'm going to take you 30 years in the future as to what we can anticipate. What we think right now is science fiction could actually become the reality. Come on. Oops. Only takes a moment for the unthinkable to become reality. In the near future, tragedy may come with new choices. Imagine you've been in a car crash that's killed your daughter. Is she okay? Is she okay? Or has it? Is she breathing? Is she breathing? Hey. Is she okay? Time of death, 9:17.
Your daughter's brain was not impacted by the accident. If you wish to scan her brain for digitization and upload, you have approximately 5 minutes. Do it. Now imagine the power you wield when you can order a digital copy of your daughter's brain. And do you know what comes next? Hi, Dad. One day delivered to your doorstep is an artificially intelligent android that will act, look, emote, just like your daughter. Every memory from birth on will remain intact, but she'll also be a walking computer with access to all the world's knowledge. This is what your world will look like. This is the future of artificial intelligence. It's the deep future. Your body, gone. You're all computer, all the time. So this really is more futuristic, but let me tell you what is actually happening at this stage. As you know, that precision health really is becoming a one-stop shop. It is where you can go to one mall, and in that mall you will have available to you every single aspect that you could expect, from a coffee shop to maybe a pharmacy and a restaurant and clothing shops, each and everything. So the precision health is really becoming a one-stop shop, and that is everything is getting integrated, from a pharmacy to your healthcare, to your really, every aspect will be on the fingertip. So if we have really not locked down to all of these opportunities, where we have not really made our system sophisticated enough and connected, we will miss out a big time. And so when all of this was happening, then came the coronavirus, and we then began to realize as to how we really managed our life and where we were on the scale of really these modern technologies. And this tiny little virus, which really came from a bat, and it took us by surprise that we thought that we had the MRI, CT, we have this and we that, and all of a sudden this little fellow threw everything in the shambles. But what you could do now is that people have really taken as a, good things always come out of some of these tragedies. So people started to think about how could we, once we develop vaccine, that we could develop these vaccines using this tiny little capsule, कि छोटे से कैप्सूल्स में अगर हम वैक्सीन डिलीवर कर दें और जिस शख्स को भी वैक्सीन लगी है अगर उसके अंदर हम कोई आइडेंटिफायर अपना डाल दें, सो आपको जो है पता चल जाएगा कि किसको वैक्सीनेशन हो चुकी है और जिसकी नहीं हो सकी. अब देखिए ये टेक्नोलॉजी जो थी, ये पर्पस इसका मेडिसिन ही से था कि how can we identify people who have really been vaccinated. So they're allowed to go through the airport and also all the security aspects of it. But this particular gadget has also become really very important because the technology has no home of its own. It always slips into other disciplines. So people in Scandinavian countries, more than 4,000, have this chip now implanted between their index and the main finger. And what it does is that it carries all of your healthcare data. It carries your health, it carries your vaccination data. It also carries your even credit card information. It carries your banking information, and just about everything is in this little capsule, which is chipped. And the way you now have tap on your credit card, when you touch, it will read out and then you make your payments. So you could now actually do this in a hospital setting where these radio frequency identifier can individually identify a patient, their entire medical record, and everything else could be actually on the fingertip of a doctor. The moment you leave your home, the doctor already knows all of your history beforehand.
And all you need is that really tap onto these radio frequency readers, and you come close to maybe a few inches, and all of a sudden, all of your information is really available to your doctor, to physicians, and other places. Now, this particular technology is already in the market. And I personally have one chip as well implanted, and that has all of my information as well. And it really doesn't bother me. And I can tell you, it hasn't changed my faith. और इस चिप से जो है ना किसी ने मेरे दिमाग को अगवा नहीं कर लिया और मुझे बेदीन या लादीनी नहीं बना दिया, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए कि you have to be only couple of really inches closer to the actual radio frequency readers. Otherwise, no one can steal your information. और आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई चिप नहीं लगा सकता. तो ये वैक्सीन के जो आपने जो कंट्रोवर्सी की थ्योरी सुनी हुई है, ये सब बोगस है, ये सब बेकार है. हम लोगों के पास ऐसी कौन सी कोई कुदरत के राज हैं जो दुनिया चुराना चाहेगी, मां सिवाय इसके कि हम लोग अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है. मैं तो उस वक्त का इंतजार करूंगा कि जब लोग कहेंगे कि मुसलमानों ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, हमारे साथ ये हाथ कर दिया. So I hope that time comes, but don't worry, vaccine is really, really important, and there is no way anybody could affect you in any case. Okay, so this is something that's a technology already in. And then there are other biosensor technologies, and we have developed some of these. Biostamp, for example, Biostamp is usually, it's a wireless device whereby you can monitor a patient. को खुदा न खास्ता अगर आपके यहाँ कोई ज़हनी अमराज के मरीज हैं, वो कहीं चले जाते हैं, और या आपको निसियान की बीमारी की वजह से बुजुर्गों को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं, या ऐसे जिनको ये याद नहीं रहता कि उन्होंने दवा लेनी है, या आपने उन पेशेंट्स को, एल्डरली रिलेटिव्स को मॉनिटर करना है अपने घरों में, अस्पतालों में. So you actually can use this biostamp. It will not only monitor their vital signs, it will also provide their GPS location, कि इस वक्त कहाँ हैं, खुदा न खास्ता अगर वो गिर गए हैं या वो बेहोश हो गए हैं. So ये सारी की सारी information आपको इन biosensor technology से आपके सेल फोन पे आ जाती है. And this is actually already in the market. अब ये देखें, precision health की ये सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि बजाय इसके कि आप एक large population को टारगेट करें, आप एक प्रिसीजन का मतलब है, प्रिसीजन हेल्थ का मतलब यही है कि पर्सनलाइज हेल्थ. तो आपकी हेल्थ जो है वो इंडिविजुअलाइज हो गई. अब आप एक शॉर्ट गन की अप्रोच नहीं है कि आपने एक ही लाठी से तमाम जो है उनको हकाने के चक्कर में आप रहें, बकरियों को, गाय को. लेकिन क्योंकि हर शख्स की कोई भी दो थंब प्रिंट्स आइडेंटिकल नहीं है, दो आयरिसेस आर आइडेंटिकल नहीं है, and no two patients are identical. So I think the idea of precision health or personalized health is to separate this particular individual and identify them. जैसे तिब्बे यूनानी तिब्ब में जो था, इसी तरह से जो बुअली सीना की जितनी भी कैनन ऑफ मेडिसिन है, आप जितनी भी उनकी बुक्स पढ़ें तो उन्होंने तवज्जो इसी बात पे की थी. तो ये जो प्रिसीजन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है, ये हमारे ही आबो अजदाद का शुरू किया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली हम उसी से इतना इस कदर दूर हो गए हैं कि हम अपनी शनाख्त भी भूल गए हैं. तो ये बायोसेंसर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, they are already in the market, and so and they are being applied in a larger population whereby you can detect a patient की vital signs भी ले लें. खुदा न खास्ता किसी को seizure होता है, it can trigger an alarm, आपके सेल फोन पे मैसेज आता है, यही मैसेज जो है फिर वो चला जाता है आपकी एम्बुलेंस को. एम्बुलेंस के पास आपका जीपीएस लोकेटर है, तो वो आपको लोकेट करके एम्बुलेंस फौरन आ सकती है, चाहे कि आपके पास कोई बुजुर्ग मौजूद हो या ना हो. उसमें यह कि खुदा न खास्ता किसी को स्ट्रोक होता है, तब भी ये साइंस जो हैं वो ट्रिगर कर देते हैं, स्ट्रेस एंड अलार्म. शुगर की अगर प्रॉब्लम हो गई है, somebody passed out, then anytime their body posture changes, it will trigger a response through these biosensor technologies. So इसकी application बेइंतहा है, and these are technologies already in the market. हमारे students ने एक और जो है वो technology develop की थी कि जिसके अंदर से you actually take these little capsule, you swallow them. This capsule goes through your GI tract, कि आपकी आंतों में से जाने के बाद एक तो वो बैक्टीरिया के सैंपल्स भी कलेक्ट करता है,
और कि आपके जीआई की हेल्थ कैसी है। और इसके अलावा अगर वो पॉलिप नजर आती हैं, उसको वहाँ पे कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नजर आती है, तो ये उसको खुद भी जो है वो यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आपको उसकी प्रिसीजन इंफॉर्मेशन भी दे सकता है कि वो प्रिसाइजली किस जगह पे आपके पॉलिप्स हैं, बिकॉज दे कैन देन टर्न इनटू cancerous cells or the tumors and also impact your GI health. So इसमें ये है कि it comes out at the other end, and by then, throughout the process, it is really giving you very important information about the different kinds of microbial flora. Yeah, क्योंकि gut microbiome is becoming really, really important because it really defines who you are. The metabolites जो भी हैं आपके gut microbacteria की, वो आपकी शख्सियत और आपकी सेहत का तयन करती हैं और तज्जिया करती हैं। इसीलिए ये टेक्नोलॉजीज हैं, they are actually coming out whereby you could do these things non-invasively, but else also at the basis of individual level, hence the precision or the personalized health. Immunotherapies are becoming very important, where you can actually use your own immune system to target cancer cells. तो आपने इम्यून सिस्टम्स के सेल्स को भी ऐसे प्रोग्राम कर दिया कि वो आपके जो कैंसर के सेल्स हैं उनको ये टारगेट कर सकें. And this is becoming really a very hot area where you could treat now diseases for which there is no cure, and then you don't have to really give chemo or any kinds of radiation, but program your own immune cells to be able to handle these cells which are anomalies, जो बिल्कुल abnormalities हैं. इसी तरह से जो nano particle हैं, nano medicine, this is really playing also very important role. These nanoparticles, they could be really programmed to identify. अगर इनको आपने टैग कर दिया कोई किसी भी specific यानी antibody के साथ, तो ये जो है antigen, अगर आपने वो cancer, types of cancer, maybe it's a glioma, maybe it's a meningioma, या कोई और different breast cancer है, और आपका lung cancer है, या ovarian cancer है, they have very specific antigens on them, and these nanoparticles can specifically target them. और target जाने के बाद चाहे वो उनके साथ जब attach होंगे antibody or antigen के reaction के through, they are programmed to release toxin that specifically targets those cells and kill them, and then remove them from your body and dispose them. So इससे यह है कि आप उस तरह से कैंसर के location को भी locate कर सकते हैं because they are fluorescently tagged, but you can also use these technologies to zap all these tumor cells that are in different kinds. The area of genomics is also playing really very important role. हम अपने अस्पताल में एक pregnant माँ के खून से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके होने वाले बच्चे में कौन सी genetic defects होंगे. So the genetic defects, you could diagnose just from the blood of a pregnant mother, and we can define all potential genes that baby or the fetus could really inherit or is carrying those genes. So for rare genetic diseases and disorders, these kinds of technologies are really, really on the forefront, and they're playing very important role. We recently identified 15 different rare genetic disorders at our children's hospital for which we previously had no clue. And this was done by just collecting the actual blood samples from mother who was pregnant, and immediately after pregnancy, you could then decide if, God forbid, agar bacha Down syndrome hai, ya koi aisi deformities hai, you could predict using these genes, you could actually make a decision. Either for those genes that we cannot do gene editing, पहले यही होता था कि fetus को abort कर दिया जाता था, उसके लिए amniocentesis भी लोग करते थे, अगर if you are over 30 and you're having a baby, but now अब ये technology है कि you don't have to abort the fetus, but what you could do is you can actually use CRISPR, which is technology जो gene editing की techniques है, और आप उसमें जो है वो जो defective gene है उसको आप जो है वो एक सीजर से एक किस्म का उसको काट के उसकी जगह आप या तो उस डिफेक्टिव जीन के पूरे सीक्वेंस को एलिमिनेट कर दें डीएनए से, या उसमें आप हेल्थी डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं.
So ये जो CRISPR की technology है, gene editing technology, it can really make targeted modification to DNA more accurately and very, very precisely. So अब ये gene editing की technologies is really what the future is, because then you could edit those genes for autism spectrum or disorders, or if you have Down syndrome, or many other, genetically carried alleles of defective genes. So not only gene therapies is becoming important for precision or personalized diagnostic, but also precision health and personalized modifications could be made to edit those genes with exquisite accuracy, and you could have really a normal baby. The other important thing that has really been revolutionized, and I think it will become a forefront, is the 5G technology. इसकी वजह से क्या होगा कि पहले हमारा जो बैंडविड्थ लो था, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाते थे, अब वो सारी की सारी चीजें जो है वो यानी Tele-Health है या digital health है, they will become possible with this 5G network that will allow you to basically control just about anything. Virtual reality से है, semi-autonomous vehicles हैं, opening and locking the doors in your house, controlling electricity, even riding, bike and directions, coffee making, and even flying drones is becoming all possible. And you can now think about importing all of these technologies back into a hospital setting, and you can imagine what will actually happen in the years to come. So बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले bandwidth की वजह से limitations थी, अब जो है वो इन यानी 5G network की वजह से they will become really super, super fast and effective and efficient and doable. And I will give you a few examples of this. इसी तरह से देखें quantum और जो cloud computing है, this is becoming another major breakthrough in the field of medicine, where you could now process information जो पहले मुमकिन नहीं थी. So if you are recording from 100,000 brain cells, the data that it generates, or the data, the population health, we could not really compute them. But now cloud computing is allowing us to be able to really not only acquire this data, but store this data and also disseminate this data, distribute it for a more integrated learning and healthcare system. So this is also becoming really a major breakthrough in the field of medicine as well. अब इसी तरह से remote diagnostic and surgeries, because of G5 network, is becoming a possible. आपका मरीज तो फॉर एग्जांपल कराची में है, लेकिन आपको उसका डायग्नोसिस और सर्जरीज जो है वो हैदराबाद से भी कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ आपका इतना फास्ट हो गया है कि you are just at par with the surgical skills or the acquisition of data by an MRI machine or a CT scan. So the remote diagnostics of surgeries, and this is also done at the precision health or personalized health level. Ab hybrid operating rooms jo hai, whereby you could actually combine robots and the robotics and to perform and skills with surgeon that reduces the number of staff that you would need because you have a helping hand. आपको मिसाल दूं, हमारे यहाँ हमारी ही यूनिवर्सिटी में हमारे ही ग्रुप में डॉक्टर गार्नेट सदरलैंड is one of the best neurosurgeon. अगर आपने कभी कनाडा का जो आर्म है, कनाडा आर्म जो स्पेस स्टेशन में जो आर्म लगा हुआ है, वो हमारी ही डिस्कवरी है, और उसी की बुनियाद पे हमने एक रोबोट्स बनाया था कि जो देखिए वैसे होता है आमतौर पे अगर आपने ब्रेन में ट्यूमर रिमूव करना है तो उसके लिए जब आप पेशेंट्स की एमआरआई करते हैं तो एमआरआई की इमेज के बेस पे सर्जन अपनी सर्जिकल जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन जब आप ब्रेन को खोलते हैं तो अंदर सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, कभी ब्लड वेसल्स हैं, कभी मेटासेरेब्रल आर्टरी के करीब हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी आपको जो है वो नॉर्मल टिश्यू के पीछे ट्यूमर है जो आपको नजर नहीं आता. तो अब ये किया है हमने कि we can actually take that patient live into an OR में ले जाके आप जो है MR में डाला, लेकिन क्योंकि MR में अब आप सर्जरी नहीं कर सकते, ना तो वहाँ पे कोई जगह इतनी है, ना ही आप कोई टूल्स यूटेंसिल्स ले जा सकते हैं उस रूम के अंदर जहाँ पे 5 टेस्ला मैग्नेट है,
तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि we have a robot that is built inside, but it is made out of titanium. तो वो टाइटेनियम का बना हुआ है. अब सर्जन जब लाइव इमेज देखता है, उसकी पूरी पूरी दीवार की स्क्रीन के ऊपर ब्रेन की लाइव इमेज आ रही है. तो वो जो रोबोट है उसके ऊपर जो माइक्रो मैनिपुलेटर्स हैं, वो सर्जन एक्चुअली कंट्रोल्स विद जॉयस्टिक, and he can perform surgery with exquisite accuracy. So the hybrid operating rooms, they are really also becoming a reality. And this is what I told you, the intra-operative robotic MRI surgeries. This is what we do here in our hospital to remove tumors that are really otherwise very sensitive. And we can remove these tumors with exquisite accuracy. अब यही robots हैं, they can actually perform phenomenal surgical skills to the extent कि ये stitching भी जो है वो बहुत ही accurate कर सकते हैं, और उन area में जहाँ पे आमतौर पे surgeons की ज़रूरत होती थी, and surgeon can operate these tools personally to be able to really fix certain things. Now, as I said earlier, कि 3D printing is becoming very important. कि 3D printing से आप cartilages हैं, even you could really 3D print a retina. You can print bones and joints and hips and carpals matter. इन मुख्तलिफ जो चीजें हैं आपकी 3D printing आप कर सकते हैं. इसके अलावा आप जो है MRI स्कैन को फीड करके जब प्रिंटर से 3D printing आप image print करते हैं, so you actually have the real human brain with all of its exquisite intricacies on your desk. And then you can design and plan your surgery and the plan of action कि वो क्या होगा. So 3D printing is also revolutionizing the field of medicine. And again, it is precision, it's personal, and it's individualistic. The 3D printing की वजह से tissue, मैंने जैसे कहा है कि tissue engineering है, you could really scalp है, bones हैं, cartilages हैं, nerves हैं, and even blood vessels you could really do using either stem cells and other aspects of it. You can 3D print these organs. Artificial intelligence and machine learning is also becoming really important because the machines can learn very fast, and you can use artificial intelligence algorithms whereby they could really a fatigue element of fatigue for surgeons, mistakes and errors made on the judgment and mood and the temperament of individual looking at these images at that particular time. They can always avoid it by using these artificial intelligence and machine learning devices, which are really coming online. And we use them now all the time for most of our radiology equipment. The virtual reality also is really becoming very important tool that we also use to teach and train, whereby you could actually take young trainees and you can send inside a human body where they can navigate through the entire body, and they could see the heart, they could see different parts. And this allows them to really learn the anatomy, rather than using a cadaver, but the real virtual human that they can really interact and integrate. The other thing you could do with virtual reality is that people who have had post-traumatic stress or disorder, कि आप जा रहे थे, खुदा न खास्ता कोई accident हुआ, that memory is stuck in your brain. What can you do to be able to really bring them back from that shock, that mental health, by eliminating their memory, for example? The virtual and augmented reality and is combined with mixed reality, and we do this in our lab as well, where we actually not only train students at a very high resolution but also really get them trained in the area of post-traumatic stress disorder. हमारे hospital में अभी आप आएंगे तो you can actually see these robots, and they have made an entry into hospital. अब COVID-19 के दौर के ज़माने में मरीजों को पानी देना, उनका टेम्परेचर लेना, उनकी वाइटल्स लेना, उनके और चीज़ों को देखना, तो बजाय इसके कि नर्सें भागती फिरें, we have these robots that actually run around the hospital, and they do all kinds of data collection, as well as also providing service of food, delivery, and many aspects. And they wander around
and they're actually quite friendly as well. So they have this big smile on their face all the time. So the other thing is these advanced robotic technologies are coming online, whereby you could really use these robots to interact with humans at various different levels. So I would switch gears here to talk a little bit about our own work as to how these disruptive technology, ये disruptive इस तरह से है कि हमारी जो 1920 का जो तर्ज अमल था या मेडिसिन की प्रैक्टिस थी, ये उसको किस तरह से ये हमें डिसरप्ट कर देती हैं, हमारे तर्ज जिंदगी को, हमारी मेडिसिन की प्रैक्टिस को, और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग they actually will be transformative in the future. ये किस तरह से field of medicine को transform करेंगी. So हमारी lab जो है, it's actually we are interested in understanding first of all how brain functions. This was not possible before. अब हर individual शख्स का brain जो है वो उसके जिंदगी के तजुर्बात और genes तो देखिए बहुत कम ही रोल 10-5% रोल प्ले करती हैं. Most of it is mostly epigenetic, और हर शख्स का माहौल उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है. इसी तरह से no two brains are identical. इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रैक्टिस करें मेडिसिन की तो वो आप उस पेशेंट्स के सारी हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ हो, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसके ब्रेन से किस तरह से डेटा डाउनलोड करें या उसके ब्रेन के साथ किस तरह आर्टिफिशियल डिवाइसेस को मुत्तसिल करें कि आप उनके ब्रेन की जो तालमेल है, उसके असरार और रमूज है, उसको आप मुनकशिफ कर सकें. तो एक तो ये मरहला है कि अगर आपने ये समझना है कि दिमाग किस तरह से सिंपल रिफ्लेक्सेस को, कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स हैं, लर्निंग है, मेमोरी है, कॉग्निटिव फंक्शन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि जो लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ब्रेन सेल से रिकॉर्ड कर सके, जो अब तक नहीं था. हमारी टीम वो पहली टीम थी कि जिन्होंने डायरेक्ट ब्रेन सेल्स के साथ एक सेमीकंडक्टर चिप को मुत्तसिल करके दोनों में गुफ्तो शनीद का एक सिलसिला, एक डायलॉग रादर देन मोनोलॉग का सिलसिला हमने शुरू किया. दूसरी बात ये थी कि अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो वो स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर डिजीज है, ये जितनी भी निसियान की बीमारी है, जितनी भी दिमागी अमराज हैं, इनका कोई इलाज नहीं है. वो टिश्यू जो डेड हो जाता है वो कभी रीजनरेट नहीं करता. वो जो फंक्शन लॉस हुआ है उसको हम रीगेन नहीं कर सकते. तो इसके स्टेम सेल की थेरेपी, कोई भी थेरेपी ब्रेन सेल्स पे काम नहीं करती. तो इसका एक ही हमने सत्यवाद ढूंढा कि किसी तरह से वो जो फंक्शन लॉस हुआ है उन ब्रेन सेल्स की वजह से कि जो डेड हो गए, डैमेज हो गए हैं, हम उस फंक्शन को किसी सेमीकंडक्टर चिप के साथ रिप्लेस क्यों ना कर दें. तो लोग हंसने लगे कि ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. हमने असल में करके दिखाया कि एक्चुअली दिस इज पॉसिबल. सो जो ब्रेन और चिप कंप्यूटर इंटरफेसिंग की टेक्नोलॉजी है, ये भी प्रिसीजन हेल्थ की तरह से इट विल प्ले रियली मेजर सिग्निफिकेंट रोल. अब देखिए जो ब्रेन की आपकी प्लास्टिसिटी है, ये हमें कुदरती तौर पे अटैच कर देती है मशीनों के साथ. अभी देखिए इस वक्त जो है वो मैं अपने कंप्यूटर से अटैच हूँ, मेरा कंप्यूटर सर्वर से अटैच है, ये सर्वर सैटेलाइट से अटैच है, वहां से ये आपके साथ अटैच है. तो हम कुदरती तौर पे भी मशीनों और कंप्यूटर्स के साथ हम अटैच तो होते ही हैं. इसीलिए हम नेचुरल साइबोर्ग भी हैं. हम अपने सेल फोन से अटैच हैं, सेल फोन दूसरों से अटैच है. तो हम मशीन के साथ तो कुदरती तौर पे अटैच ही होते हैं. और हमारा जो ब्रेन है ये हमेशा अपने आप को रिकॉन्फ़िगर कर लेता है, और अपने आप को जो रीबूट कर लेता है, रीअलाइन कर लेता है वो किसी भी टूल के साथ यूज होने के लिए. और हम ये हर वक्त करते रहते हैं. और ये जो सिस्टम है ये कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हमारी सोच से भी ज्यादा. और इसमें यह है कि इस चेंजिंग दुनिया के अंदर जो है हमारा ब्रेन सरवाइव करता ही इसी वजह से है कि ये हर वक्त चेंज होता है. अगर ये चेंज ना हो तो हम बिल्कुल भी दौर में सरवाइव नहीं कर सकते. अब कोरोना वायरस आया, सबने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की, वैक्सीनेशन है और दूसरी चीजें हैं. तो हमारे ब्रेन ने उस ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन ट्रीटमेंट को, सर्जरीज को अडॉप्ट कर लिया. अगर ब्रेन ऐसी अडॉप्शन ना करता, प्लास्टिसिटी ना होती,
तो हम आज तक इस दुनिया में इस मकाम पे ना पहुंचे होते हैं। अब आप देखिए इन्हीं अडॉप्शन की जहाँ तक बात है, अब इन साहब को देखिए कि ये इनके ब्रेन को हमने ये बावर करवा दिया कि ये जो मसनूई हाथ है इस पर तुम फोकस करो, और इनका जो अपना हाथ है ये इनसे छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही इनकी आंखें इस मसनूई हाथ पे हैं, तो जब भी कोई ब्रश इसको स्ट्रोक करेगा तो इसके साथ साथ जो है वो इनके मसनूई हाथ को भी स्ट्रोक करेगा, अपने हाथ को भी और मसनूई हाथ को भी। और देखिए क्या होता है फिर उसमें। I hope it plays, but if it doesn't play for some reason, practice. Here you can see the fake hand focusing on it. There's the real hand not focusing on it, simultaneous stroking, and there are various ways you can test it. Let me show you one more time. Oops. Practice. Here you can see the fake hand focusing on it. There's the real hand not focusing on it, simultaneous stroking, and there are various ways you can test it. अब देखिए आपके दिमाग ने ये बावर कर लिया कि ये मसनूई हाथ आपका अपना ही है, तो जो फैंटम लिम्ब है, ये जो लोगों के बाजू कट जाते हैं, आपके दिमाग में ऐसा ही असर होता है कि जैसे वो ऑर्गन अटैच है। तो अगर आप मसनूई हाथ को लगा के ब्रेन की इस जो कंप्यूटर और इंटरफेस के साथ मुतसिल कर दें, तो आपका दिमाग इन मसनूई हाथों को ऐसे ही कंट्रोल करेगा जैसे कि ये अपना हाथ है। तो हमने जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग में हमारी लैब में हम ये इलेक्ट्रोड माउंट करते हैं स्कैल्प के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं दे एक्चुअली डू जो भी इनका दिमाग इस वक्त सोचता है या करता है, वो कंप्यूटर जो है वो रोबोट उसी को पिक कर लेता है, और हम अपने सिर्फ दिमाग से लाइटें ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और इसके लिए किसी अगर आप छोटे बच्चे को भी ले आए और इलेक्ट्रोड माउंट कर दिए, तो ये बच्चा जो कुछ भी करेगा ये रोबोटिक मंकी उनके एक्शंस को कॉपी करता चला जाएगा। हम इनको ट्रेन करते हैं कि ये इस क्यूब को जो है वो कंट्रोल करें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी फॉरवर्ड कभी बैक। इसी टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल करते हुए जो है हम ड्रोन को सिर्फ अपनी ब्रेन पावर से फ्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कार डोर्स एक्चुअली This card is also brain controlled. इसमें कोई रिमोट नहीं है, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे इस गाड़ी को ड्राइव करना है, किस तरह से। Similarly, we can actually fly a drone. तो इस ड्रोन में हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं क्योंकि स्कैल्प पे माउंटेड इलेक्ट्रोड्स को रिसर्च इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी जो जियो पोजीशन है कि उस वक्त किस तरह। देखिए लैब में कितनी टाइट जगह है, बट इट विल स्टिल एक्चुअली फ्लाई एंड लैंड इट with exquisite accuracy. So the idea really is that you could interface brain with any kind of external device, लेकिन implantation जो है chip की going inside was a major really challenge. वो देखिए होता यह है कि अगर हमारे यहाँ अस्पताल में कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो पार्किंसोनियंस हैं, उनके ऊपर दवा असर नहीं करती, then you end up implanting a deep brain stimulation electrode, and when you implant that deep brain stimulation electrode, वो patient उसको stimulate करता है, so those dopaminergic neurons that have been damaged, they get stimulated and they release tons of dopamine, and that helps alleviate their tremors. लेकिन इसमें ये कि ये one way talk है, क्योंकि stimulator जो है वो brain cells को stimulate तो करता है, लेकिन वो चीखते हैं भाई बस करो बस करो बस करो, मगर उसकी जो है वो चीखो पुकार कोई सुनता नहीं है। As an end, these electrodes actually end up damaging brain in the longer run. You get excitotoxicity, which is mediated by glutamate, and it's not really an effective, क्योंकि ये एक यकतरफा मोनोलॉग है। इसी तरह से ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, आप इलेक्ट्रोड स्कैल्प में माउंट भी करते हैं सर्जरी के बाद से, तो वो उनके सिर्फ सीजर्स को पिक कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते।
तो ये भी एक वन वे टॉक है जिसमें ब्रेन सेल आपके ट्रांजिस्टर से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बात करते हैं, लेकिन ये वन वे टॉक है। हमारी कोशिश ये थी कि हम ऐसे डिवाइस डेवलप करें, सेमीकंडक्टर चिप, जिसमें जो है स्टिमुलेटर ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करे, और ये ब्रेन सेल्स जब इनका आपस में राब्ता हो, ये सेल इससे बात करे, तो ये जब ये सेल फायर करे तो ये ट्रांजिस्टर उसके नीचे सिग्नल को पिक कर ले। तो वो ब्रेन सेल्स जिनका आपस में राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप उनको बाईपास कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए से। सो दिस रियली वाज द प्रेमिस एंड दिस इज व्हाट वी डिड। लेकिन ज़ाहिर है ये आप इंसानों पे तो तजर्बा शुरू नहीं कर सकते, तो हमने जानवरों से किए, लेकिन ब्रेन सेल्स को अलाइव करने के लिए, कीप देम अलाइव, वी हैड टू डेवलप दिस इंक्यूबेटर जिसमें हम CO2, PCO2 टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करते हैं, और हम इन ब्रेन सेल्स को कई महीनों तक ग्रो करते हैं, उनके नेटवर्क्स डेवलप करते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, वो हमने ऐसे केमिकल सबस्ट्रेट्स बनाए कि जो ब्रेन सेल को उन पे ग्रो करने में भी एतराज़ ना हो, वो समझें कि ऐसा जैसे वो ब्रेन में ही ग्रो कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर मनफी असरात ना हो किसी भी किस्म के केमिकल के जो आपने चिप में लगाए हैं। तो अब हम जो है वो 100,000 ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को रियल टाइम मॉनिटर कर लेते हैं, जिससे हमें ब्रेन की जो आपस में गुफ्तो शनीद का जो तरीका है, या इनकी आपस में जो इंटरैक्शंस हैं, या इनके जो ताल्लुकात हैं, इनके जो कम्युनिकेशंस हैं, उनको हम डीकोड कर सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये कल्चर्ड के सेल्स हैं, ये हो सकता है ब्रेन में एक दूसरे से उस तरह से कनेक्ट ना हो जिस तरह से हमने इनको कल्चर में मसनूई तौर पे कर दिया। तो हम एक ब्रेन का स्लाइस काट के जब उसको हम अपनी चिप के साथ लगाते हैं, तो हम हर ब्रेन रीजन की एक्टिविटी को एक्सक्विजिट एक्यूरेसी से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है वो सीजर्स हैं, वी कैन एक्चुअली डिटेक्ट सीजर इन द हिप्पोकैम्पस एरिया ऑफ द ब्रेन। तो उसमें यह है कि हम इन लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ब्रेन की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि ब्रेन सेल्स को जो है वो कांटेक्ट जरूरी है इन 3D इलेक्ट्रोड्स के साथ। उनके बारे में क्या सोचा जाए कि जो ब्रेन सेल्स एक आपकी चिप के साथ बराह रास्त जो है वो मुत्तसिल ना हो, तो उसके लिए हमने एक और टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसको हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर जो ब्रेन सेल्स को हम ग्रो करते हैं, इनको हम लेबल कर देते हैं मुख्तलिफ डाई से। जब ये फायर करते हैं तो ये वोल्टेज सेंसिटिव डाई से ये लाइट अप हो जाते हैं। तो वी कैन एक्चुअली फायर लेजर थ्रू द माइक्रोस्कोप। जो वेफर है सिलिकॉन का, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, तो ये ब्रेन सेल एक्टिव हो जाते हैं। And then we can monitor the activities of large networks of brain cells, millions of brain cells. हम उनकी activity को at the level of single neuron और single brain cell आप detect कर सकते हैं। तो इसका अगला stage क्या है कि आप यही technology, you can now take it into an intact animal. अब इस monkey का बाजू नहीं है, you can actually plant inside the brain. जब इसकी visual cortex makes a contact with the palate, और वो विजुअल कॉर्टेक्स सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से बात करती है, एंड देन सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स एक्चुअली हैज अ चिप। वो चिप एक्टिविटी पिक कर लेती है, क्योंकि वो चिप आपने डिजाइन किया, ये मसनूई हाथ पे आपका डिजाइन किया हुआ है। तो ये जैसे आप अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से आप ये मंकी जो है अपने ही ब्रेन से और ब्रेन के साथ जो चिप है, जो ब्रेन सेल्स की बात को सुन रही है, उनके एहसासात को महसूस कर रही है, वो इसी तरह से इस मसनूई हाथ को भी कंट्रोल कर सकती है। So the technology is really coming to a forefront, whereby these technologies will now start coming into individuals and humans. The last part of my talk is really यानी अगर हम इसको इंसानों में ट्रांसलेट करें टेक्नोलॉजी को, तो वो पहली कौन सी होगी? तो हमने उसके लिए सीजर डिटेक्शन के लिए wirelessly हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो we actually teamed up with biomedical engineers and neurosurgeons and many experts in the area. तो उसमें हमने ये कहा कि नॉर्मली होता यह है कि ब्रेन जब किसी बच्चे को मेडिसिन सीजर्स कंट्रोल नहीं करती,
और सर्जन ये तहैया करता है कि इसके लिए सीजर ज़रूरी है, यानी सर्जरी ज़रूरी है, तो वो या तो ये सरफेस इलेक्ट्रोड जो है सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि इस तूफान में बिजली कहाँ चमकती है, और वो फिर वो बिजली चमकने का जो एरिया है उसको जाके सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो उसमें ये स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड ब्रेन को खोल के लगा दिए जाते हैं, और इसमें देखिए ये जो वायर है ये 30 फुट लंबी वायर होती है कि जिससे वो पेशेंट जो है वो अस्पताल में कनेक्टेड है और उसको 10 दिन रखा जाता है ताकि ये मालूम किया जाए कि ये सीजर किस जगह से आ रहे हैं। तो उसमें देखिए ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। सो हमने ये कहा कि बजाय इसके कि ये सब कुछ वायरलेस, ये वायर्स अटैच्ड हों, बच्चा स्ट्रेस में होता है, हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं, क्यों ना हम ऐसी चिप डेवलप करें जो इनसे 300 गुना ज़्यादा सेंसिटिव हो, वो MR कंपैटिबल भी हो और उसके साथ साथ वायरलेस भी हो। तो ये कि अगर सर्जन ये चिप इम्प्लांट कर दे ब्रेन में और वो जो है उसके बाद उसके ब्रेन के स्कैन ले लिया जाए, तो ताकि ब्रेन के वो हिस्से और उन इलेक्ट्रोड की पोजीशन का अंदाजा हो जाए, और फिर ये किया जाए कि उसको कंप्लीटली वायरलेस कर दें। तो उसमें यह कि अगर किसी बच्चे को कभी भी सीजर हो तो वो वायरलेसली, उसके पास छोटा बैकपैक सेल फोन की तरह से है जेब में, वो सारी सीजर की इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचती है, और वो सॉफ्टवेयर एक थर्मोग्राम 3D इमेज क्रिएट करके सर्जन को वो भेज देता है कि देखो इसको जो है 10 दिन में 20 सीजर्स हुए, और वो 20 सीजर जो है वो 23 इलेक्ट्रोड के इलाके में है, और तुम्हें जो सर्जरी अब करनी है वो तुमने ऐसे करनी है। So we ended up actually testing this chip, making it completely wireless, and take it out. ये जो छोटा sensor है outside, it can really provide information wirelessly to a portable device, and then the child can go home after surgery, and we can detect these seizures with exquisite accuracy at the level of single electrode. So ये 3D electrodes हैं. So you know these technologies, अब हम लोग इसको pair कर रहे हैं. Imagine 5G, we are pairing up with Apple, whereby we could have a cochlear implant, and और इनको जब भी किसी बच्चे को seizure होने लगता है, the electrode picks up the signal, वो dial करेगा उनका cell phone, उनसे कहेगा कि you're about to have seizure, settle down, I just dialed 911, and the ambulance is on its way. They know exactly where you are. मैंने आपकी बीवी को भी फोन कर दिया और उनसे कहा कि घबराई नहीं, आपकी जायदाद सब आपके नाम हो जाएगी, आप you're richer than you think. So even at that level you could have an exquisite integration of these technologies. And I think I won't take you into the other area that we're working on, nerve regeneration, conduit that we are working on. And this approach is also allowing us for paraplegic patients to be able to regain their lost function as well. So I think I am out of time right now, so I'll be happy to take any questions. Sir, it was a wonderful presentation के आज हमें न्यूरो साइंसेस के हवाले से और माशाल्लाह से जो आपकी लेबोरेटरी में हमने जो अचीवमेंट्स देखी, समझ लें कि एक साइंस की दुनिया में वहाँ पर एक इनकलाब बरपा हुआ है कि इतनी सारी जो है इजादात और इतनी सारी जो है चीजें जो हमारे लिए आगे जाकर एक पूरी दुनिया में एक जो है एक इनकलाब की सूरत में और एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। तो लेकिन ये कि सर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमें थोड़ा सा इसको लेकिन आगे माशाल्लाह से जो अभी आपने बताया कि और भी आगे चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा से एक बार ज़हमत देंगे ताकि हम जो चीजें आपकी लेबोरेटरी में और भी जो चीजें हो रही हैं और जो एक साइंस की दुनिया में जो एक ऐसी न्यू इन्वेंशंस हो रही है तो उसके बारे में हम मजीद डिस्कस कर सकें। अच्छा सर, अभी हमारे पास ये प्रिसीजन मेडिसिन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सर पहला तो सवाल ये है कि what do physicians generally think about precision medicine? इसी में ही मैं इस सवाल को भी एडअप कर लूं कि जो है how will personalized medicine affect the cost of medical care? इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे।
देखिए हमारे यहाँ प्रिसीजन हेल्थ इज द मैंडेट, तो हमारे यहाँ इसमें अब कोई यानी कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि आप जो है वो एक ही तरीके से तमाम पेशेंट्स को देख लिया। अगर आपने को मैनिक डिप्रेसिव है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, वही आपने दवाई जो खानदान में लिखी जा रही थी पिछले 20 सदियों से वही दवाई आपने दे दी। क्योंकि एक्चुअली आपको जो है वो प्रिसीजन हेल्थ में ये कि टारगेटेड है, जैसे प्रिसीजन में जीन थेरेपीज हैं, टारगेट दैट स्पेसिफिक जीन, immunotherapies and you target that specific immuno disorders or tumor or cancer. इसी तरह से अगर किसी को GI की प्रॉब्लम है तो you target specifically those areas. So इसी तरह से अमराज में भी जो है दो शख्स के एक जैसे इन्हीं अमराज नहीं होते, हर एक की मुख्तलिफ उनके अमराज हैं। तो आपने, और ये देखिए कोई नई बात नहीं है, अबू अली सीना ने जो है वो आपको तिब में बता दिया था कि हर शख्स के अंदर अपना एक मिजाज है, एक अपनी तबीयत है, एक अपना टेम्परामेंट है, और उस टेम्परामेंट को आपने मद्देनजर रखते हुए उस शख्स का इलाज करना है, ना चे जाए कि आपने एक ही लाठी से सबको हाँकना है। सो प्रिसीजन हेल्थ हमारे यहाँ तो कॉमन प्रैक्टिस है, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में क्या है। देखिए उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, आपको मरीज को प्रॉपरली डायग्नोज करना पड़ता है। इवन अगर इंटेंसिव केयर इमरजेंसी में लोग कहते हैं कि आई मे नॉट सी दिस पेशेंट अगेन, मैं आपको बता दूं 80% गारंटी है कि ये पेशेंट दोबारा आपके पास आएगा। तो अगर आपने उनकी पर्सनल प्रिसीजन हेल्थ का रिकॉर्ड नहीं देखा तो आप उनकी सही तरह से तशखीस नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो फिर दोबारा आपके पास आएगा। तो देखिए इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी लाए अमल को तय करते हुए आप मरीज के साथ, देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मेडिकल स्कूल में नहीं गए थे, उनके पास ना MD थी, ना MBBS, ना PhD की डिग्री थी, उनके पास क्या था? पैशन एंड कंपैशन। तो उसमें यह है कि आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा ख़ास तौर पे कि जो मरीज़ है उसकी आप अच्छी तरह से तशख़ीस, उनकी पूरी हिस्ट्री लें और उनको फिर उसी हिसाब से ट्रीट करें, चाहे जाए कि आप वो करें। पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन के लिए देखिए आपको अभी से जो है वो आप पुराने जो खिलाड़ी हैं उनको आप नए स्ट्रोक नहीं सिखा सकते, तो लेकिन जो यंगर जनरेशन आ रही है इनके लिए ये ज़रूरी है कि you actually prepare them mentally that you need to treat individual patients individually. सर जिन लोगों ने हमें हमारे हाशमानीज ग्रुप ऑफ पेज पर ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग हमें अभी लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से एक हमारी व्यूअर्स हैं रिमशा जाहिर अली शाह। उन्होंने हमसे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कैन वी आइडेंटिफाई all types of genetics problems by a single method? You can, but not all of them. You need to really have the primers that you are targeting. आपको मालूम होना चाहिए कि ये अगर genetic disorder है, I mean the whole human genome sequencing is becoming a piece of cake. वो जो human genome जिस पे 2 बिलियन से ज़्यादा खर्च हुए थे, अब वो आपको $1000 में मैं आपका पूरा जीनोम सीक्वेंस करके दे सकता हूँ। और ये एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये आपको जो है only couple of $100 you will be able to have the entire genome. देखिए इसमें ethical issues यही है कि अगर किसी ने आपकी वो information हासिल हो गई और उनको पता है कि इनके अंदर cardiac problems हैं, फैमिली में genetic Alzheimer और Parkinson's के factors हैं, they may not insure you. तो आपको insurance companies deny कर देंगी, jobs आपको नहीं मिलेंगी. So ethical issues तो हैं, but can we do in terms of looking at all known potential genes? Absolutely. And we actually detect rare genetic disorders from all around the world. अभी इसी साल में हमने over 15,000 different rare genetic disorders we diagnosed in children, जिनकी पहले कोई भी जो है पता ही नहीं चलता था. So it is possible for sure. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरे पास है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन मेडिसिन या और प्रिसिशन हेल्थ और पॉपुलेशन हेल्थ, और एंड हाउ कैन वी मेक श्योर दैट access to personalized medicine is fair and educatable?
देखिए इसमें जो population health is actually is a larger population data. लेकिन जब तक आप individual data आपके पास नहीं होगा, आप population को extrapolate नहीं कर पाएंगे. तो अगर देखिए जैसे clinical trials हैं, वो clinical trial एक शख्स पे नहीं हो सकती, ठीक है? इसी तरह से आप देखिए कि आपके यहाँ vaccines जो थी वो clinical trials में they go through. You need to really also pay attention कि उसमें भी you have to really have large contingents of population data. So उसमें ये कि there were 40,000 people who were tested for Pfizer and Moderna vaccine. तो वो आप जब clinical trial phase 2 में phase 3 में आएंगे तो वो आपको large data will be available, and then if you find consistency in terms of the जो भी etiology है disease की, you could then take precision health into maybe a population health. But and it also goes from top to bottom as well. तो उसमें ये कि जब आपके पास individual data नहीं होगा, आप कोई भी population के अंदर कोई data populate कर ही नहीं सकते. अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मुलज़ूम है, अगर आपने Pfizer की वैक्सीन दी कुछ 15 साल के बच्चों को, अगर उनको कार्डिक इन्फ्लेमेशन हो गई तो वो हुई तो सिर्फ 2 को थी. So this is individual data, but it will affect your population decision making in the longer run. बिल्कुल सर, हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट कैंसर मरीज हैं, अगर किसी को सिस्टिक फिब्रोसिस है या कोई अनडायग्नोज कंडीशंस है, तो उनके लिए ये जो प्रिसिशन मेडिसिन है या ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, ये किस हद तक जो है बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं? देखिए इट डिपेंड करता है. अगर इन यूरो जो है आपने डायग्नोज कर लिया, so you could actually do it because they're genetic disorders. We don't know what triggers those genes. It could be many different factors. It could be the epigenetics, and so you can actually fix them at an early stage. आप बाद में जाके भी उन जीन्स को selectively delete कर सकती हैं कि जो इन symptoms को produce create कर रही हैं, they're generating. लेकिन क्योंकि genome is properly mapped, तो अगर आपने यानी आपके गले में आपने को हार पहना हुआ है कीमती, उसमें से 2-3 मोती तोड़ भी दिए अगर आपने, तो आपको ये मालूम नहीं है कि उसकी साख्त कैसी बैठेगी. You don't know which other particular genes may trigger some other aspect. So tumor हो गया, कैंसर हो गया. तो देखिए बहुत सी ऐसी जीन हैं जैसे we have MEN1 tumor suppressor. ये tumor suppressor जो है आमतौर पे ये आपकी यानी जो endocrine system है, ये उसको suppress करने वाली genes हैं. But they also play other role in, for example, brain development as well. So genes के multi-target functions हैं. You need to really know that if you are specifically going for diseases, जैसे अब autoimmune diseases में आप देखिए हमारे यहाँ अल्बर्टा में MS is the world capital of MS disease. उसकी वजह ये है कि यहाँ का एक तो clean air है, clean water है. आप बच्चे 8 महीने आप बाहर नहीं निकल सकते सर्दी की वजह से. ना यहाँ आप जो है ना बकरियों के पीछे भागते हैं, ना दुम्बा मंडी जाते हैं, ना सब्जी मंडी जाते हैं, ना आप मुर्गियां पकड़ के खुद हलाल करते हैं. They don't see anything. As a result जो है इनका immune system जो है वो बैठा बैठा वो अपने आप को ही, जब शैतान की तरह से उसको शरारत सूझती है तो वो अपने आप ही को काट पीट शुरू कर देता है. So you actually get psoriasis, you get dermatitis, you get MS related diseases. हमने पाकिस्तान में कभी नहीं सुना था MS के केसेस इतने होंगे. हमने पाकिस्तान में एलर्जीज का सुना ही कभी नहीं था कि किसी को पीनट से एलर्जी हो गई. लोगों से एलर्जी रहती थी मगर इन चीज़ों से एलर्जी नहीं होती थी. लेकिन यह है कि अब देखें कि किस हद तक यहाँ पे हर दूसरे बच्चे को कोई ना कोई एलर्जी है. So if you have a really healthy diet and you look after yourself and you don't let your immune system sit idly, it will not attack. तो वो अब क्या
उनको ट्रिगर करती हैं? Whether there is a genetic component, and if we could identify those genes, we already know genes, but there are 200 to 2000 genes that are really involved. अब आपको ये नहीं मालूम कि ये genes all function क्या करती हैं, right? So if you try to delete them, you don't know what else could happen. फिरोज मेहर साहब हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू फिरोज मेहर साहब फॉर अप्रिशिएटिंग वर्ड, एंड थैंक यू सो मच सर. बहुत ज़बरदस्त सेशन, और ये कि इतनी ज़्यादा आज हमें एक इंफॉर्मेटिव सेशन सुनने को मिला कि जिसमें हमें प्रिसिशन मेडिसिन के अलावा भी जो साइंस में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपने बताया कि जो है ड्रोन के हवाले से कि हम अपने माइंड से कैसे जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. और इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर जो है हम मज़ीद आपको जो है अपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट करेंगे, क्योंकि सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमें आपसे सीखनी है, और ये कि हम सब लोग जो है जानना चाहते हैं कि साइंस की फील्ड में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिस पर हम लोग जो है प्राउडली फील कर सकें और कह सकें कि भाई ये हमारे डॉक्टर नवीद सैयद साहब हैं जो इस तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं. और माशाल्लाह माशाल्लाह. जी ऐसा कुछ नहीं है. ये तो देखिए ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसकी अल्लाह ने शिफा न रखी हो. बस ये कि हमें उसको खोजना है. उसके लिए देखिए सेल्फलेस होना ज़रूरी है कि शिफा अल्लाह की जानिब से है. ना कोई डॉक्टर किसी को शिफा देता है, ना दवाई किसी को ठीक करती है. लेकिन दवा जो है वो इंसानों के लिए, मरीजों के लिए है, वो मुनाफे के लिए नहीं है. जैसे ही आपने मुनाफे का सोचा, अल्लाह शिफा ले लेता है. तो शिफा मिन जानिब अल्लाह है और अल्लाह ही की तरफ से होता है. वो नियतें देख के आपके हाथ में वो शिफा दे देता है. और यही टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है. जो शिफा मिन जानिब अल्लाह है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है. तो देखिए यानी मैंने कई ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिस्क्राइब नहीं की कि लोग डर जाएंगे, जो लेकिन ये हकीकत है कि many of these technologies are actually coming online. And next time, hopefully, I'll take you into an OR, and then you could see a brain surgery actually happening live. बेशक सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तमाम हिकमत है, तमाम चीज़ें. थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना हमें कीमती टाइम दिया. और जो लोग हमें हमारे फेसबुक पेज से जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग हमें वहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना टाइम दिया. इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप लोग के लिए वेबिनार्स करते रहेंगे. आप लोग के हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा. आप लोग हमें फीडबैक दीजिए, बताइए कि आगे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप हमें सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट सेशन तक की इजाज़त चाहिए. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.